मैरी क्रिसमस दोस्तों, आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विशिंग अ मैरी क्रिसमस टू all of the friends on Joy Shaving channel. Hope this Christmas brings happiness, prosperity and joy in all of your lives. Let's do this Christmas special shave. थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लिया है मैंने चेहरे पे. यूज कर रहा हूं मैं कैलाश शेविंग सोप फ्रॉम शेवोलॉजिस्ट. एज आई टोल्ड, दिस इज गोइंग टू बी माय मोस्ट फेवरेट शेविंग सोप ऑफ 2022. सो just 10 swirls with Joy Edition brush from Rupp. This is again one of my favorite brushes. Very nice brushes. Real 26 mm, nice heighted knot. Wow, what a scent this soap has. Beautiful. बहुत ही बढ़िया यार. क्रिसमस का मजा ही आ गया. अफगानो नॉयर काइंड ऑफ सेंट से, और आई शुड से ब्लैक अफगानो काइंड ऑफ सेंट. वाओ, रियली गुड. क्रिसमस फॉर अस इज विंटर्स, सो विंटर्स के हिसाब से ये सेंट बहुत ही अच्छा है. सम ऑफ द अदर सेंट्स विच कुड हैव डन इज लाइक caramel and cake and plum and rum and all those things, but yeah, this is also very good winter scent and I like it a lot. And मैंने सोचा कि यार क्रिसमस पे ऐसी शेव की जाए जो काफ़ी पसंदीदा प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करके. ओके, एंड आई ऑल्सो वांट टू प्रोपोगेट दिस कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 2-3 पासेस करें. विद द ग्रेन करने के बाद कोई अक्रॉस और अगेंस्ट ग्रेन करना कोई ज़रूरी नहीं होता. एंड दैट्स वाई आज मैं विद द ग्रेन शेव करूंगा. एंड आई वुड लाइक टू प्रोपोगेट दिस मैसेज दैट टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड हेल्थ गाइज. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू डू मल्टीपल passes. It is not who you look from outside. It is what you are from inside. It is what your character is. Okay. In this 2022, I have learned a lot of things. I have learned from good people how to be. I have learned from some other people how not to be. And I have learned from some people that you cannot believe everyone. Yeah, I learned that as well. These are all lessons of life. So it's good. Alright, आज कोई swirly motions नहीं किए हमने, painting motions किए. And this lather still is okay. पानी जो है थोड़ा सा hard है, I know. And that's why, as I told you know, lathering में थोड़ा सा जो है वो issue होता है जब पानी hard होता है. But still I feel this is a good enough lather. Let's begin the shave and आगे बात करते हैं. Since I'm shaving with favorites, razor is 91R. One of my always ये top पे रहेगा. And blade is Gillette Wilkinson sword, which actually it comes in a tuck like this. Okay, ये वाला Gillette Wilkinson sword made in India. That is also one of my favorite blades. Alright, shave कर लेते हैं. काफी बार लोग पूछते हैं कि कैन यू यूज पार्कर 91R फॉर डेली शेविंग. For me personally, with smoother blades or with blades like Wilkinson sword, I can use this for daily shaving. Why? Because I always say daily shaving में सिर्फ और सिर्फ 1 pass with the grain. न ज़्यादा चोंचले, न ज़्यादा परेशानी, इरिटेशन के चांसेस मिनिमम,
और परेशानी एकदम कम। विद द ग्रेन जब आप शेव करते हैं तो रिलेटिवली एलम फीडबैक भी आपको सबसे मिनिमम मिलता है, या अल्कोहल बेस्ड अगर आप आफ्टर शेव यूज करते हैं तो उसमें भी आपको एलम फीडबैक सबसे मिनिमम मिलता है। सो वो इसलिए क्योंकि एक तो आप विद द ग्रेन शेविंग कर रहे हैं, दैट मीन्स डायरेक्शन जो बालों का है उसके साथ में शेविंग कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि आप कम बार जो है स्किन पे ब्लेड फिरा रहे हैं। अगर आप इसके बाद अक्रॉस और अगेंस्ट द ग्रेन करोगे तो शायद आपकी शेविंग क्लोज तो होगी, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि आपकी इरिटेशन लेवल्स जो है स्किन के वो बढ़ जाएंगे। देयर आर हाई चांसेस, बिल्कुल। ऑलराइट, लेट मी रिंस द फेस और फिर बात करते हैं आगे। चेहरा मैंने कर लिया है रिंस, एंड अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ रियल एलम। सो व्हाट इज रियल एलम? जैसे मैंने आपको बताया था प्रेस्ड एलम और एक्चुअल एलम स्टोन होता है। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस real alum stone, not the pressed one. And because I am using some of my favorite products, how could I miss product given to me by my very true friend Sri Shailendra Ji Chauhan Sahab. Yup, man of character. I have seen a lot of loose characters this year, lots of them. और कुछ लोग तो ऐसे धोखेबाज निकले कि क्या ही बोलूं उनके बारे में। जब उनको मदद की जरूरत थी तो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प किया, एंड व्हेन इट वाज टाइम फॉर मी टू आस्क फॉर हेल्प, वो लूज कैरेक्टर्स ने अपने लूज कैरेक्टर दिखा दिए। लूज कैरेक्टर्स लूज देयर कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दे आर लूज कैरेक्टर। या बट it gives me an opportunity to remember the good and the bad, the right and the evil, and that's why it is equally important to know both. Appreciate the right and kill the evil. Alum को कर लेते हैं हम rinse. It is also killing the bacteria. Okay. और रिंसिंग के टाइम पे दोस्तों मैं कोल्ड वाटर यूज करता हूं, बिकॉज दैट हेल्प्स टाइटन अप द स्किन एंड क्लोज द पोर्स एज सच। गुड, नाइस। ऑलराइट, अगेन आफ्टर शेव्स, वेरी रिलायबल, वेरी फेवरेट आफ्टर शेव, एक्सटिंग्विश द फायर फ्रॉम रुप। मैन, ये क्रीमी सेरेमी कंसिस्टेंसी का है। आई टेक अबाउट दिस वन, ओके, एंड इतना लगभग लिया। Wow, very good. I especially like the lavender scent, really flowery. Very good. Really very good. Absorbs quickly, non-greasy, non-oily, but provides that moisture and toning at the same time. Yup, really very good. So a really good Christmas shave दोस्तों, enjoyed it a lot. I hope कि आपकी लाइफ में ऐसे लूज कैरेक्टर्स और ऐसे बैड इवल्स ना आए, वो सब छट जाएं और आपको हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिले। That's what I wish for. I hope you are blessed with real friends and real well wishers, and I pray to God that all your good wishes come true. Merry Christmas once again. Thank you very much for joining today. Keep up the good shaves. Bye bye. Namaskar.